Jai Hind and welcome to the 10th lecture in Polity series of 30 day CAPF crash course. This is Himanshu, All India rank 163 in 2019 CAPF. देखिए today this lecture will be covering two topics, that is comparison of various bills and constitutional post, very important from exam viewpoint. So let us begin. देखिए पहला जो बिल है ऑर्डिनरी बिल है. This ordinary bill can be introduced in either of the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. It is introduced by member or private member. देखिए इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर एंड और प्राइवेट मेंबर. देखिए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर में डिफरेंस व्हेन हम पार्लियामेंट चैप्टर करेंगे तो डिटेल में समझ लेंगे. देखिए प्रायर परमिशन का मतलब है कि प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि नहीं ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इसमें वी डोंट नीड प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल. मेजॉरिटी बिल जो मेजॉरिटी चाहिए ऑर्डिनरी बिल पास होने के लिए, दैट इज़ सिंपल. ड्यूरेशन इज़ 6 मंथ. मतलब अगर एक हाउस अगर बिल पास करता है दूसरे हाउस में तो दे आर हैविंग 6 मंथ टू टेक अ कॉल ऑन इट. जॉइंट सिटिंग, अगर देखिए कोई डेडलॉक होता है ऑर्डिनरी बिल में तो दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108, दैट इज़ कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. स्टेटस जो है देखिए सिंस ऑर्डिनरी बिल जो है लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है तो दे आर हैविंग द इक्वल स्टेटस ऑन दैट. एंड प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, यू कैन ईदर एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट इट और रिटर्न विथ रिकमेंडेशन. नेक्स्ट इज मनी बिल, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज मनी बिल, वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 110 डील्स विद द मनी बिल. इट इज़ इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम व्यू पॉइंट से आप इसको याद रखेंगे. इट इज़ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी बिल से प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड. इसमें मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल. ड्यूरेशन 14 days. सी वंस द बिल इज पास बाय द लोकसभा, राज्यसभा इज हैविंग टू टेक कॉल. इट कैन ईदर टेक एक्शंस. अगर वो एक्शंस नहीं लेते हैं 14 days में, स्टिल द बिल इज़ डीम टू बी पास्ड. जॉइंट सिटिंग मनी बिल में नहीं होता है. आप ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम व्यू पॉइंट से आप इसको ध्यान रखेंगे. देखिए सिंस इट इज़ इंट्रोड्यूस ओनली इन दी लोकसभा तो लोकसभा की स्टेटस मनी बिल पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है. बिकॉज राज्यसभा कैन ओनली प्रपोज more addition, subtraction, can only propose amendments to it but can't control it. Now प्रेसिडेंट के पास भी 2 ऑप्शन है मनी बिल को लेकर के, आप इसको ध्यान रखेंगे. प्रेसिडेंट कैन ईदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट बट ही कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकमेंडेशन. देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 117 है, दैट डील्स विद द फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2. देयर आर 2 काइंड्स. फिलहाल आप इतना समझिए, जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में डिफरेंस क्या है. बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल 1 जो है मेजर वो मनी मैटर से ज़्यादा डील करता है. सो दैट्स वाई इट इज़ सिमिलर टू मनी बिल काइंड. एंड इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. दूसरा है प्रायर परमिशन. हाँ, इसमें प्रायर परमिशन की ज़रूरत है. फाइनेंस बिल 1 के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड. मेजॉरिटी इसमें अगेन सिंपल मंथ. ड्यूरेशन इज 6 month. जॉइंट सिटिंग, येस इट इज़ पॉसिबल इन दिस केस. स्टेटस इज equal in both the cases. It can be introduced. President can either accept it, reject it or return with recommendation. Finance bill kind 2, it can be introduced in either house. Prior permission is not required. Majority we need is simple. Duration is again 6 months. Joint sitting, yes possible. Status, yes equal. President can again accept, reject or return. Next is constitutional amendment bill introduced in either house. Prior permission is not required. Majority we need for this is 6 months. Joint sitting, no, there can be no joint sitting in the case of constitutional amendment bill. If the bill is stuck, then there can be no joint sitting in case of constitutional amendment bill to resolve the deadlock. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे. स्टेटस इन दिस केस इज बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा आर हैविंग इक्वल पावर इन दिस. President in this case must give assent to the bill. आगे next proceed करते हैं. The next topic is very important. We'll be talking about the constitutional bodies. देखिए constitutional bodies के respect में जो points आपको याद रखना है is
The articles mentions the article composition, it is who appoints them, tenure of service, and who removes them. So let us begin. First topic is in our constitutional body is Election Commission of India. The article that mentions about Election Commission of India is 324. Composition, पहले चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और भी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. President can also appoint regional commissioners. President appoints it. He also determines size of election commission. Qualification not mentioned. Tenure जो है 65 years or 6 years, whichever is earlier is determined by the president. Removal, again chief election commissioner is like a judge of Supreme Court. Others, so president removes in consultation with chief election commissioners. Ground, the mention in constitution is proved misbehavior or incapacity. Post incapacity. Next is Attorney General and Advocate General. Article 76 deals with Attorney General. Advocate General is 165. Composition, single member body, appointed. President appoints Attorney General. Advocate General, President appoints Attorney General, and Advocate General is appointed by Governor. Qualifications to be qualified as Judge of Supreme Court and High Court respectively. Tenure is at the pleasure of President and Governor respectively. Removal, no procedures is mentioned. President for Attorney General and Governor for Advocate General make decisions in this matter. Post-retirement job, depart from private legal practice. Next important constitutional body is CAG, that is Comptroller and Auditor General of India. He is also known as Guardian of Public Purse. This is an important point. You need to remember this. The article that mentions about CAG is Article 148. Again, it is a single member body appointed by the President under his warrant and hand. 65 or 6 years is the tenure as decided by the Parliament. Qualifications, removal just like a Judge of Supreme Court. Post-retirement job, not eligible for any job under the union or state government. Next is UPSC. Again, the body that you are being preparing for. The article that mentions UPSC is Article 315 to 323. Chairman and other members determined by the President. This is the composition. They are appointed by the President. इसीलिए जब आप अपॉइंट होंगे एज असिस्टेंट कमांडेंट यू विल बी कॉल्ड डागो, दैट इज डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Next is qualifications. Half of the members should have experience under Government of India or state government for 10 years. Tenure 65 or 6 years. दोनों के लिए ये chairman and member दोनों, and they are appointed by the president. Removal, again President of India. Ground, adjudged as insolvent, infirmity of mind, body, or engages in employment outside office. Misbehavior, Supreme Court inquiry is necessary. Post-retirement job, not eligible for employment outside UPSC. Members can be appointed as chairman and chairman UPSC or State Public Service Commission. No reappointment for chairman. Next important body is the State Public Service Commission. The article that mentioned is Article 315 to 323. Chairman and other members. These are the composition determined by the governor, appointed by the Governor of State. Half of the members should have experience under Government of India or state government for 10 years. Again, the age is again the tenure is 62 or 6 years. They are appointed by the governor. Although they are appointed by the governor, only the President of India can remove them. Again, they are not eligible for appointment or any other job under government. State Public Service Commission members can become chairman of any other State Public Service Commission or UPSC chairman or member. National Commission for SC/ST. The article that mentioned about is that you need to remember is 338. Initially, there was only one commission, National Commission for Scheduled Castes, and that used to look after both. After the 65th Constitutional Amendment Act, one more body was created for STs, and the article that was added is Article 338A. You need to remember.
Composition is chairman, vice chairman, and 3 members. They are appointed by the president under his warrant and seal. No qualification as such, and tenure is determined by the president. It is normally for 3 years. Removal is again by the president, and there is no limitations on post-retirement jobs. Next is Finance Commission. The article that mentioned, very important from the exam viewpoint, the article that mentioned is Article 280, that is determined by the composition is determined by the president parliament. Again, they are appointed by the president of India. Qualification is again determined by the president, appointed once in 5 years. Finance Commission. Next is a special officer for linguistic minorities. The article that mentioned is 350B. It has been added by 7th Constitution Amendment Act. Very important fact you need to remember. Again, it is a single member body appointed by the President of India. Qualification, silent is Constitution is silent in the qualification. Tenure, again Constitution is silent here. Removal, silent, Constitution is silent here. ये बहुत ही अच्छी बॉडी है, इस सारी चीज़ों पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है. आप इसमें सिर्फ 2 फैक्ट याद रखेंगे. 350B 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड सिंगल मेंबर बॉडी. नेक्स्ट हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक में देख लेते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी. फ्यू फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटी आया था. पार्ट 9B देखिए, टोटल 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 9B है, दैट इज डीलिंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी. स्टेट लेजिस्लेचर मेक प्रोविजंस. नंबर ऑफ डायरेक्टर, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड्स. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, अगेन स्टेट लेजिस्लेचर. ऑफिशियल लैंग्वेज. पार्ट 17 आर्टिकल 343 to 351. लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ हिंदी. सेंटर एंड स्टेट के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश. इट वाज फॉर टेम्पररी, स्टिल इट इज़ इंग्लिश. रीजनल लैंग्वेजेस स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस. लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट. All proceedings in Supreme Court and High Court, bills, acts, ordinances, it should be done in English temporarily. Special directives 2 हैं. Protection for of linguistic minorities and development of Hindi language. Services, article 308 to 314 in part 14. 310 deals with tenure of service, tenure of office. 311 safeguards to public servants. Need to remember 3 categories, that is all India service, central services, and state services. In all India service lies 3 service, that is Indian administrative service, Indian police service, and Indian forest service, not foreign service. Tribunals, 42nd amendment added tribunals. Part 14A, equal to High Court judges. 323 article A is administrative tribunals. 323B is for other matters. That's all for this lecture. Stay tuned for more lectures. I hope these lectures are making sense to you. Take care. Thank you.